टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद ग्रेडियंट डिसेंट। तो मैंने क्या सोचा ना, लाइक आज का जो सेशन है, दिस इज आई विल ट्राई टू कीप इट मोर ऑन पेन एंड पेपर, बट मैंने पीपीटी पे कुछ चीजें रखी हुई हैं बिकॉज आई अज्यूम कि कुछ चीजें तुमको आ रही होंगी। माय वर्क इज जस्ट टू मेक यू रिकॉल दो स्टफ, इसलिए मैं उस चीजों को पीपीटी पे रखा हूँ, बाकी आई विल गेट टू हैंड्स ऑन। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद ग्रेडियंट डिसेंट. So in today's session, we will discuss what this gradient descent is. We'll build the mathematics behind this entire concept. जैसे हमने linear regression में mathematics derive किया, जैसे हमने multivariable regression में हमने वहाँ पे mathematics define किया, यहाँ पे we'll do the same. We'll build the mathematics on which this gradient descent is based on. Then we'll build the algorithm. ठीक है, दिस एल्गोरिथम विल बी सम काइंड ऑफ सूडो कोड. हम पाइथन में भी उसको ऑब्वियसली करेंगे, बट इन जनरल इफ यू वुड लाइक, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म मशीन लर्निंग विथ जावास्क्रिप्ट. तुम जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो. देयर इज दिस tensorflow.js जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर टेंसरफ्लो. सो माइंड यू, जो भी हम सीख रहे हैं, ठीक है, पाइथन इज अ वेरी नाइस टूल टू डू इट, बट अगर तुमको कोई और अच्छा, जैसे देयर इज दिस लैंग्वेज नोन एज आर, आर आर फॉर रैबिट. ठीक है, so you can also do it with that. You can also go for MATLAB पे भी तुम कर सकते हो. ठीक है, so we'll have this algorithm which will be mostly useful कि अगर तुमको पाइथन के अलावा भी या पाइथन में ही तुमको पहले समझना है कि हम क्या लिख रहे हैं, it would be helpful. Then we'll see the implementation part, जैसे हम हर एक सेशन में. So अभी तक last session में we saw कि there was a normal form. If I have to solve for a regression problem, let's say a linear regression, be it simple or multivariable, वहां पे हमने लास्ट सेशन में एक मैट्रिक्स फॉर्म और एक नॉर्मल फॉर्म देखा था, राइट? करेक्ट. सॉल्व करने के लिए देयर वाज समथिंग इनवर्स एंड सम कुछ कुछ ऐसा था. अब उसमें मैंने तुमको एक कॉम्प्लेक्सिटी बताया था, दैट इनवर्स ऑपरेशन इज ऑफ द ऑर्डर क्यूब. तुम्हारा इनपुट साइज जितना है उसके क्यूबिक के रिलेशन में जितना कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है वो इंक्रीज करेगा. सो एट एनी कॉस्ट दैट ऑपरेशन यू कैन डू इट फॉर अ वेरी स्मॉल डेटा सेट. 100 का भी डेटा सेट तब भी बड़ा हो गया, बट लेट्स से यू हैव अ डेटा सेट ऑफ 5 पीपल 6 पीपल, हाँ, तो यू कैन डू इट, नो इश्यूज. बट व्हेन वी आर डीलिंग विथ रियल लाइफ डेटा जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डेटा होता है, मिलियंस ऑफ डेटा होता है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड उतना टाइम क्यूबिक रिलेशन में जाना. ठीक है, सो मोर ओवर दैट वाज अ नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट कि हमको इनवर्स ऑपरेशन करना पड़ता, वो इनवर्स ऑपरेशन मेरा सारा काम खराब कर दे रहा था. बट what we were getting the best value for which the loss function is minimized. Let's say this w is your slope and b is your intercept. तो इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे को मिला था, फॉर विच द लॉस फंक्शन इज मिनिमाइज्ड. उस रिलेशन में भी वी आर गेटिंग दैट. हमने जब हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा तो वी हैव गॉट दैट वैल्यू. बट gradient descent, if I will tell you what this thing is, it is an iterative optimization algorithm. What do I mean by optimization? जो चीज हम कर रहे हैं उसको और अच्छे से करना. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही होता है मोर और लेस, है ना? जो चीज हम कर रहे हैं उसको ऑलरेडी अच्छे से करना. ठीक है, एंड अभी इटरेटिव पार्ट पे बाद में आते हैं. व्हाई डू वी यूज इट? टू फाइंड द मिनिमम ऑफ अ फंक्शन. अब ये फंक्शन क्या है? दिस इज अ लॉस फंक्शन. लेट्स सी व्हाई डू वी यूज इट. एक्चुअली it aims to adjust the model to minimize the cost function. Like this j is your cost function for this parameters slope and intercept, जैसे हमने last session में भी देखा था. So just a second, let me go back. So you have to make some changes in this w and b. उसका कुछ ऐसा value निकाल के मेरे को लाना होगा, for which this cost function or your loss function, whatever you mean to say, this gets minimized. सबसे कम लॉस होता है मेरा. So I want that value of w and p. ठीक है,
This is what your gradient descent. Ab why it is an iterative algorithm? Because we'll see कि हम इस algorithm से एक बार में correct answer नहीं ला सकते हैं. We cannot get the correct answer in just one step. हमको ये algorithm multiple बार करना पड़ेगा, then we would be able to reach to the optimized value. एक बार में you will not get the answer. For example, जैसे if I say कि तुमको एरिया कैलकुलेट करना है, तो सिंपली यू गेट द पैरामीटर्स फ्रॉम मी, लेंथ एंड ब्रेड्थ, सिंपली तुम उसको कैलकुलेट करके एक ही बार में आंसर निकाल के दे दिए मेरे को. कैन वी डू इट? और अगर मैं मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दूं तुम लोग को, तो तुम सीधे सीधे बोलोगे ओके, इफ ए इज योर नंबर, बी इज योर अनदर नंबर, यू सिंपली डू द मल्टीप्लीकेशन and give me the sum. This is your straight away method. Iterative method is you will take a number and you will add it the other number of time. Multiplication is what? Repeated addition. If I say 2 multiplied by 4, so you will take 2 and you will add it 4 times. 2 plus 2. Then whatever answer you'll get, you will again add 2 in that. Then again add 2 in that. So what you're doing, you're building an iterative approach to get to the correct answer. Okay? So this is what an iterative approach is. We'll see what this gradient descent is. अभी आगे जब mathematics we'll do, but उससे पहले थोड़ा मैं base clear कर दूं तुम लोग का. So I guess loss function समझ में आ रहा होगा क्या होता है, राइट? नहीं भी आया तो चलो ठीक है. लाइक खुशी नहीं है आज इस सेशन में. लाइक सी दिस व्हाट दिस कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन इज. इट इज अ फंक्शन व्हिच मेजर्स द एरर. जितना एरर आ रहा है तुम्हारा बिटवीन योर प्रेडिक्टेड एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू, दिस इज द फंक्शन व्हिच मेजर्स दैट. लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, लाइक मीन स्क्वायर्ड एरर, एंट्रोपी लॉस फंक्शन, बहुत सारे होते हैं, बट वी विल मोस्टली डील विद मीन स्क्वायर्ड एरर यहाँ पे भी. एंड आई गेस वेक्टर कैलकुलस आई गेस थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लिए होगे फर्स्ट ईयर में जो भी आ रहा, लाइक व्हाट दिस ग्रेडियंट कर्ल, ये सब तो पढ़ लिया होगा ना. what a gradient is with defined to some vector f. A gradient is simply this thing. Why do we need like gradient? हम gradient का जरूरत क्यों है? Because see, it indicates how much the cost function, यहाँ पे whatever is the cost function here, changes if we change the model parameters. What are the parameters we are having? We are having slope and intercept. अगर हम उसमें थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, वह लॉस फंक्शन कितना ज्यादा चेंज कर रहा है उसको कोई ना कोई चीज मेजर करनी चाहिए. दैट इज दिस ग्रेडियंट. ठीक है, दैट इज दिस ग्रेडियंट. नाउ लेट मी हेड बैक टू वन नोट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. जस्ट टेल मी इफ इट इज विजिबल और नॉट. Just tell me if it is visible. क्या ये visible है? Give me a thumbs up if it is visible. Perfect, perfect. Okay. So let us start with gradient descent. I hope तुम लोग ने अपना कॉपी नोटबुक जो है ले लिया होगा, बिकॉज हाँ थोड़ा विल डील विथ मैथमेटिक्स, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, मैं सीधे तुमको फॉर्मूला लिखा सकता हूँ, मैं तुमको सिंपली एल्गोरिथम लिख के दे सकता हूँ, बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, इफ यू विल नॉट गेट दैट, कोई सेंस है नहीं. बिकॉज दिस इज नॉट लाइक योर वेब डेव काइंड ऑफ थिंग कि तुम जुगाड़ कर लिए इन ऑर्डर टू गेट समथिंग. यहाँ जुगाड़ नहीं चलता है. एक थोड़ा सा पैरामीटर का वैल्यू में ऊपर नीचे कर दोगे ना, तुम्हारा एरर कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, यू विल नॉट. अभी आगे जब हम न्यूरल नेट पढ़ेंगे तो विल सी. एक फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मैंने एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क बनाया टू आइडेंटिफाई समथिंग, chances are that in your first step you will get some error of 12%. Accuracy of 12%. सिर्फ एक उसमें कीवर्ड एक ऐड कर देते हैं. देयर इज दिस कीवर्ड ऑप्टिमाइजर, देखते हैं देयर इज दिस एडम ऑप्टिमाइजर. वो एक्यूरेसी को वो 12% से ले जाता है 97% पे. तो दिस इज द लीप यू आर गेटिंग विद जस्ट वन कीवर्ड. ठीक है. So let us understand what this gradient descent is and what is the mathematics behind it. So you have seen why do we use this gradient descent? Why do we use it? हमने ये देखा. So you have said, you can say that we can use it to minimize your loss function, right? You want to minimize your loss function. This is the aim. Because जब लॉस फंक्शन कम होगा, मेरा जो रिग्रेशन में जो प्रिडिक्शन आ रहा है, नॉट ओनली फॉर रिग्रेशन,
but whatever the values I am getting, whatever the output I am getting, I can improve its accuracy. हम उसका accuracy बढ़ा सकते हैं. That is the entire aim, right? So this is why we use it. How do we use it? Like you may ask, कि how do we use it? This is a very interesting question. अब just tell me, do you want me to tell this? अच्छा रुको मैं ऐसे बता. Like in the last session we have saw, if you try to plot a loss function, let's say for some variable theta, एक concave curve, एक parabolic curve होता था somewhere like this. Just tell me, ऐसा होता है? ये हमने देखा था लास्ट सेशन में, ठीक है? ये हमने देखा था लास्ट सेशन. Because see, ultimately what this cost function is, if I'll try to simplify it for you, let's say this is theta naught and theta 1. So this is essentially what? I'm not talking about mean squared error. Let's talk only about squared error. So you may say that 1 to m, let's say we have m data points. So this is what? Y minus y hat square. Okay? This is your actual value. This is your predicted value. Ab you may say this y hat is a function of this theta naught and theta 1, as if theta naught plus theta 1 x. ठीक है? ठीक है? Just tell me, ठीक है? So you can see, if I try to put this function here, can I say for certainty, because see, if I take it like this y is a value, this is a constant, right? This is a constant, minus you have a function which is dependent on theta naught and theta 1, and you're taking its square. So we can say for some certainty that j is somehow related to this theta square. With theta would be your slope, it would be your intercept, whatever be. ये relation follow कर रहा है. तो for a quadratic relation, the graph should have to be somewhere like this. अब हाँ, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, but more or less it would be a parabolic curve like this. अब the ideal case is this point. Let's say this is your theta minimum. For this point, you can see the loss is minimum. Oh, my mistake. My mistake. For this point, you can see your loss is minimum, right? इस point के लिए whatever the loss is, this is very minimum, बहुत कम है. Like यहाँ पे अगर होता तो you can see loss is this. यहाँ पे होता कहीं तो the loss is this. But for this point, the loss is minimum, right? Let us say this as j minimum. This is the minimum loss that can occur. अब you may ask me कि भैया अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही बार में हम यहाँ पे पहुंच जाएं, राइट? ऐसा तो हो नहीं सकता है एकदम एक्यूरेटली हम परफेक्टली हम कहीं एकदम सही जगह पे आ जाए, राइट? जस्ट टेल मी, गिव मी यस और नो. हाँ, कुछ केस में हो सकता है तुम एक ही बार में एकदम सही वैल्यू पे आ गए ये थीटा मिनिमम के, बट इन जनरल हम नहीं आ पाते हैं. इन जनरल हम नहीं आ पाते हैं, ठीक है? हम कुछ लेट्स से इस यहाँ पे आ गए ये पॉइंट पे, या कुछ यहाँ पे आ गए ये पॉइंट पे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते, यहाँ पे आ गए कुछ ये पॉइंट पे, ठीक है? अभी भी हम, यू कैन सी वी आर दिस मच डिस्टेंट अपार्ट.
हमको आना यहाँ पे है लेकिन हम है अभी ऊपर। अब जस्ट टेल मी वन थिंग, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा मैथमेटिक्स बिल्ड करो, बिल्ड विथ मी द मैथमेटिक्स। कैन आई से फॉर दिस पॉइंट द स्लोप इज समथिंग लाइक दिस? हाँ, उतना टच करके नहीं गया, रुको टच करके करा देता हूँ। द स्लोप इज समथिंग लाइक दिस, and for this point the slope is something like this. So can I say for this point my slope is positive, and for this point I have a negative slope? Just tell me yes or no. अरे ये पॉइंट को जब तुम ऐसे यहाँ नीचे लाओगे, this is an obtuse angle, and for whatever obtuse you may put as the parameter, the tan function will give you a negative value, right? अब this is somewhere in the acute range. तो acute range में जब हम पैरामीटर, जब acute पैरामीटर होता है हमारा tan फंक्शन में, तो tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो हाँ, I can say like, अब just let me tell you what this gradient descent is. Our aim is to get to this point. हमारा काम है इसको उठा के यहाँ पे लाना, हमारा काम है इसको उठा के यहाँ पे लाना। This is our aim, this is the goal, ठीक है? So what this gradient descent says, what this gradient descent says, what this gradient descent says कि just see here, can I say, अब जरा यहाँ पे देखो, अगर ये पॉइंट को हमको उठा के, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये पॉइंट को उठा के मेरे को यहाँ पे लाना है, तो ये पॉइंट का, अब यहाँ पे तो स्लोप देखो ऐसे कुछ जीरो है ना, यहाँ पे तो स्लोप जीरो है ऑलमोस्ट, स्लोप यहाँ पे तो जीरो है ना, पैरेलल है विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्स एक्सिस, राइट? सो कहीं ना कहीं ये जो स्लोप आ रहा है इसमें कुछ हमको घटाना पड़ेगा। आई हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम हेयर। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू नीचे घट के कुछ पैरेलल आ जाएगी। अगर यहाँ पे है तो आई हैव टू ऐड समथिंग टू गेट इट टू दिस पॉइंट। अभी यहाँ पे है तो आई हैव टू ऐड समथिंग, अभी यहाँ पे है तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग टू गेट इट टू दिस आइडियल वैल्यू। एसेंशियली हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो स्लोप आएगा, जो स्लोप आएगा हम स्लोप को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हम स्लोप सब्ट्रैक्ट करेंगे हम पीछे आते जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव का नेगेटिव लोगे तो इट वुड बी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली जब हम स्लोप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हम स्लोप ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि your gradient descent, for let us take it for theta let us say कि जो हमारा इनिशियल वैल्यू है दिस इज योर न्यू थीटा, ठीक है? व्हाट आई एम सेइंग, जो हमारा ओल्ड वैल्यू है उसमें आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्लोप, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेट अस टेक इट फॉर एग्जांपल, ठीक है? दिस इज द फंक्शन, लेट अस टेक दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, ठीक है? कुछ देयर इज सम थीटा, लेट अस से योर थीटा इज इक्वल्स टू 5, ठीक है? तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे दिस स्लोप इज 10, ठीक है? दिस हम, so my theta old becomes 5, we have started from. Our aim is to reach this point, this is the theta minimum. अब I can say कि Shrinjay, let us do this thing, let us subtract this value, let us subtract this value, ठीक है? You may ask me, theta new becomes theta old, that is 5 minus 10, so this becomes minus 5. So if I'll let me do this thing,
let me make it something like this. ठीक है, this is your loss function. So now when I subtract it like this, मेरा पॉइंट कुछ पीछे यहां चला गया, राइट? दिस इज योर -5 हो गया आगे पीछे। बिकॉज देखो एसेंशियली हम यही करते हैं, हम कुछ आर्बिटरी वैल्यू अपने से डिसाइड करते हैं जिस पे हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। ये जो 10 मैंने चूज किया ये मैंने अपने से चूज किया है, और हम आगे देखेंगे कि whenever we deal with gradient descent हम अपने से कुछ वैल्यू अज्यूम करेंगे। ठीक है, हम कुछ अपने से वैल्यू अज्यूम करेंगे। सो लेट अस से यहां पे आते ही द स्लोप बिकम्स 50, द स्लोप बिकम्स 50। सो योर न्यू थीटा बिकम्स -5 माइनस, अब दिस इज क्योंकि नेगेटिव में होनी चाहिए तो दिस इज नेगेटिव, माइनस ऑफ -50, तो दिस बिकम्स -5 + 50 दैट इज +45। अरे भाई अब तो तुम और आगे चले गए, यहाँ कुछ और ही आगे कर जाएगा, यहाँ पहुंच गए। तो यू कैन सी क्या हो रहा है कि ये पॉइंट यहां गया पहले, फिर ये पॉइंट यहां गया ऐसे, एंड सो ऑन इट विल गो ऑन लाइक दिस। बट हमारा एम तो यहां पहुंचने का है, आवर एम इज टू रीच देयर। और लेट मी टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, हम ऐसे केस में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, हम यहीं ऊपर में हिलते भैया लेफ्ट साइड। वंशिका व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट साइड? मेरा तो ऐड करते, लेफ्ट में ऐड करते मीन्स भैया आप ही ने तो बताया था कि लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। नेगेटिव होते तो उसमें ऐड करेंगे, तो नेगेटिव में ऐड करेंगे तो वो 0 की तरफ। आपने तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगाया है। जस्ट सी हियर, यही तो मैंने बोला, वी आर एडिंग। अब देखो ऐड क्यों कर रहे, बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव, हमारा फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला इज एसेंशियली दिस थिंग। अब योर स्लोप इज नेगेटिव, so नेगेटिव and negatives give you an addition। ऐसे कभी सुनिए कि फॉर्मूला चेंज हो जाए कंडीशन के हिसाब से, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है, अब सिंस स्लोप वाज नेगेटिव, देयर इज दिस पॉजिटिव टर्म। ठीक है, हाँ मैं कहा था, हाँ see, अब व्हाट, अब यू कैन टेक इट फॉर डिफरेंट इटरेशन, ये ऐसे ऐसे घूमते रह जाएगा, बट ये इस पॉइंट पे नहीं आएगा। सो हम चाहते हैं कि जिस रेट से ये ऊपर भाग रहा है, राइट, जिस हिसाब से ये इधर से उधर भाग रहा है, हम उसको कंट्रोल करें, हम उसको कंट्रोल करें। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल, देखो कंट्रोल जितना ही ऊपर नीचे भाग रहा है वो इस टर्म के कारण आ रहा है, स्लोप के कारण वो हो रहा है, राइट? स्लोप के कारण ही वो इधर उधर ज्यादा ज्यादा भाग रहा है, राइट? जस्ट टेल मी यस और नो, जस्ट टेल मी यस और नो। वंशिका सेड यस, हर्षिता, शशांक, आर्य, आदि, नंदिनी। तो so we introduce a term which is known as alpha। ठीक है, अल्फा का मल्टीप्लाई, दिस अल्फा इज नोन एज योर लर्निंग रेट। अब व्हाट इज इट, आई टेल यू, सी व्हाट इज हैपनिंग। दिस अल्फा इज नोन एज योर लर्निंग रेट, कहीं कहीं इसको स्टेप साइज भी बोलते हैं। सो ये कर क्या रहा है, इट अफेक्ट्स द डिसेंट फॉर मिनिमम और ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन। क्या होता है मैं बताता हूँ। लेट अस टेक इसी एग्जांपल में, let us take your alpha as something as 0 point, because see हम एक्चुअल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं दिस वैल्यू 0.001, बट तुम कोई और वैल्यू भी देख सकते हो जिसके लिए वो सही है, बट इफ यू टेक फॉर दिस एग्जांपल ओनली, यहाँ पे रख के देखो क्या आता है, -5 सॉरी +5 माइनस 0.01 इंटू 10, तो दिस बिकम्स बाय 100, 0.1, तो दिस इज 4.9। हाँ तो अब तुम 5 से थोड़ा नीचे आ गए,
अब नाउ यहाँ पे स्लोप 10 ही लेते हैं, भाई 10 तो नहीं होगा और कम होगा, बट चलो यहाँ पे स्लोप 9 लेते हैं। तो if we'll do it like this, you will have some different value. तो ultimately what would happen कि तुम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से फिर थोड़ा और नीचे आओगे, थोड़ा और नीचे आओगे, थोड़ा और नीचे आओगे, एंड देन यू विल फाइनली रीच दिस पॉइंट। ये होगा, क्या होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। This is your cost function, this is your parameter, and this is my curve. Our aim is to reach this point, theta minimum corresponding to this point, which is j minimum. तो देखो ये होता क्या है, लेट्स से कि दिस वाज माय पॉइंट इनिशियली। ये लर्निंग रेट बताता है कि कितना, कैसे तुम नीचे आओगे। हम ऐसे स्टेप साइज में नीचे आ रहे हैं। अगर इधर के लिए तुम कोई केस लोगे, इफ यू वांट टू टेक सम केस फॉर हेयर, तुम ऐसे ऐसे नीचे आओगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, देर आर टू केसेस हेयर। केस वन, योर अल्फा इज वेरी स्मॉल। अब तुम बोले कि भैया अल्फा से हो रहा है, तो ऐसा करते हैं अल्फा को बहुत छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा। देखो सी क्या होगा उस केस में, जे योर थीटा, दिस इज योर कर्व। सो होगा ये दिस इज योर थीटा मिनिमम। तुम इतना छोटा छोटा स्टेप लेने लगोगे, इतना छोटा छोटा स्टेप लेने लगोगे कि अगर तुमने बोला कि भैया मैं ये 100 बार करना चाहता, तुम 100 बार में हो सकता है कभी पहुंचो ही नहीं। 1000, 2000, 3000 बार तुमको लग जाए वो इटरेशन करने में, बिकॉज सी दिस इज एन इटरेटिव एल्गोरिदम। तुमको इस एल्गोरिदम का कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रन करना होगा, दैट इज नोन एज योर इपॉक। हम देखेंगे आगे इपॉक, EPOCH। दीज आर व्हाट, नंबर ऑफ इटरेशंस, ठीक है। अगर तुम बहुत छोटा रखोगे वैल्यू, तो तुम हो सकता है तुम्हारे नंबर ऑफ इटरेशंस ओवर हो जाए, लेकिन तुम अभी तक तुम पहुंचे ही नहीं हो, तुम यहीं पे रुक गए। एंड दिस इज टेक्निकली नॉट द आइडियल, दिस इज नॉट द आइडियल वैल्यू जहां पे तुमको आना है। इधर इधर के लिए रखोगे कुछ, यहां से शुरू किए, मानो तुमने बोला कि भैया मैं 100 बार इटरेशन करूंगा, क्या पता 100 करते 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 नीचे आए, यहीं पे रुक गए, इटरेशन खत्म, तुम अभी तक मेन वैल्यू के पास आ ही नहीं पाए। चलो ये तो पहला केस हुआ। क्या हो अगर हम बहुत बड़ा वैल्यू रखते हैं, क्या हो अगर हम बहुत बड़ा वैल्यू रखते हैं। केस टू, योर अल्फा इज वेरी लार्ज। अब अभी तुमने यहां देखा, यहाँ यहाँ तुमने देखा जब हमारा अल्फा बहुत बड़ा था, तो देखे यहां से यहां भागा, यहां से फिर यहां भागा, फिर और कैसे कहीं भागेगा, कहीं और ऐसे भागेगा, ठीक है। यही हो, कन्वर्ज नहीं करेगा कभी भी, इस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगा, ये इधर ही उधर घूमते रह जाएगा, हम कभी करेक्ट वैल्यू पे नहीं आ पाएंगे। संजय, ये अल्फा क्या है? स्लोप? दिस अल्फा इज योर लर्निंग रेट, दिस इज नोन एज लर्निंग रेट। ओके, ये मैं बताए, मतलब हम ही ने लेट किया है। हाँ हमने लेट क्यों किया ये भी मैं बताया, बिकॉज देखो यहाँ पे जो भी ये आगे पीछे वैल्यू जा रहा है, यहाँ से अब देखो, यहाँ से यहाँ जाना हुआ है, यहाँ से यहाँ आना हुआ है, ये सारा काम ये वाला फैक्टर कर रहा है, स्लोप के कारण हो रहा है। अब स्लोप में हम चाहते हैं कि एक तरह का कंट्रोल लगाएं कि तुम कितना कितना बढ़ सकते हो, कितना साइज से बढ़ सकते हो या घट सकते हो। तो वी हैव सेड कि लेट अस हैव दिस टर्म अल्फा, एंड दिस अल्फा इज नोन एज योर लर्निंग रेट, ठीक है। दिस इज नोन एज लर्निंग रेट। ये बताता है कि तुम, ये एक्चुअली अफेक्ट करता है कि तुम कितना अच्छे से अपने बेस्ट पॉइंट की तरफ आओगे। अभी मैं वही बता रहा था, सी अगर तुम्हारा अल्फा बहुत लार्ज हो गया, दिस इज अगेन योर कर्व फंक्शन, दिस इज योर थीटा, दिस इज द प्लॉट। होगा ये, देखो होगा ये, तुमने यहां से शुरू किया, तुम यहां भागोगे, यहां तुम कुछ यहां भागोगे,
ये पॉइंट पे आओगे, ये पॉइंट से यहाँ आओगे, कुछ भी हो सकता है, रैंडम होता है ये, दीज आर ऑल रैंडम थिंग, डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, but you will never converge to this point. You will never converge to theta minimum. You will never converge. थोड़ा क्लियर हुआ what I mean to say? What I mean to say clear हुआ? वंशिका, आर्या, नंदिनी, अच्छा, इसका हर्षिता, रीजन आदि। है कोई कि क्यों कन्वर्स नहीं होगा कि वो थीटा एम पे? अरे ये इधर ही घूमते रह जाएगा ना, ये नीचे आ ही नहीं पाएगा कभी। अच्छा, See, मतलब ऊपर की तरह this चला was जाएगा। experimentally done. तो हमारा देखो, तुम बहुत छोटा वैल्यू रख दोगे तब भी नहीं हो पाएगा। नहीं, हाँ, मैंने क्या देखो, इट इज ऑल दैट कि इट इज इटरेटिव एल्गोरिदम। ठीक है, मैं बताता हूँ इस एल्गोरिदम को कितना बार रन करना है। ठीक है, लेट्स से 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, अगर हो सकता है कि उतना बार मैं रन किया, मैं यहीं तक आया, लेकिन हमको आना यहां तक था, मैं तो नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया, राइट आदि? आदि, अच्छा छोड़ो। इज इट क्लियर जो मैंने बताया अभी तक कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ वैल्यू ऑफ अल्फा जिसपे वी आर नॉट टू स्मॉल, बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू रख लेंगे तो हो सकता है हमारा नंबर ऑफ इटरेशन रन ऑफ कर जाए और हम अभी तक करेक्ट वैल्यू पे नहीं पहुंच पाए। बहुत बड़ा भी वैल्यू वी डोंट वांट, बिकॉज इफ दैट इज द केस वी वुड नेवर बी एबल टू कन्वर्ज हियर। ठीक है, सो योर आइडियल फॉर आइडियल केसेस, for ideal cases your sorry, your alpha should be 0.001 or 0.01, ये वैल्यू ज्यादा सही है। ठीक है, for most of your cases this will work, but let me tell you it is not fixed कि यही वैल्यू होना चाहिए, हो सकता है you will get some other values जिसके लिए सही है। well it all depends question पे जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और if your epoch is your number of iterations, so 1000 टाइम्स एक जनरल प्रॉब्लम के लिए इनफ होता है। ठीक है, तो इन दिस नंबर ऑफ टाइम्स तुम पहुंच जाओगे। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भैया हमने ये इटरेशन शुरू किया, हाउ डू वी नो दैट व्हेन शुड वी स्टॉप? हम कब समझ जाएंगे कि हमारा वैल्यू आ चुका है? हम कब समझ जाएंगे जब हमारा वैल्यू आ चुका है? ठीक है, so there is only two case for which you may understand कि हाँ your value is somehow you got the value. The first very clear answer is, ऐसे समझो कि whenever we are iterating, जब हम ऐसे से वैल्यूज कर रहे होंगे तो कोई ऐसा दो पॉइंट आएगा जिसके बीच डिफरेंस वुड बी मिनिमम। what I said, हो सकता है एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इसका जो what I mean, let us say your theta new minus theta old, this value would be somewhere tending to 0, तब वो coincide कर गया, और जब coincide कर गया we understood कि हाँ ठीक है, अब we got the point, because our aim is to get to this minimum value। और एक कर्व में, if I'm talking about a curve, there is only one global minima, ग्लोबल मिनिमा सिर्फ एक होता है, एंड दिस इज दैट पॉइंट, हमको वही पॉइंट आना है। तो इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू कि तुम्हारा जो डिफरेंस आ रहा है दो पॉइंट का, दिस इज वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, देन यू मे से कि ठीक है, नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हमको इतना नंबर स्टेप करना है। और दूसरा, तुमने खुद बोल के रखा होगा कि भैया इतना बार हम करेंगे इसको, अब आए या नहीं आए वो
भगवान के ऊपर है, बट हम इतना बार करेंगे। तो these are the only two cases when you would be able to understand कि now I have to stop if this difference is very close to zero or your number of iterations has run off. Only in these two cases तुम्हारा जो gradient descent algorithm है it should stop. Was it clear इतना जो मैंने अभी बताया? हर्षिता, आदि, just tell me. Perfect, 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 perfect. So just tell me. So what I said, कि when do we stop? If this condition holds true or if this condition holds. If this is the condition, we can say कि my j theta, sorry, my j theta नहीं, my theta is actually approaching to your minimum value. Then only you will get this thing. This difference will somehow will tend to zero. बहुत कम difference, बहुत कम हो जाएगा. In that case only you will be able to understand कि हाँ अब रुक जाना चाहिए मेरे को. Because अब तुम ज्यादा करोगे तो फिर हो सकता है तुम्हारा फिर एरर आ जाए, तुम्हारा करेक्ट वैल्यू स्किप हो जाए. अब दूसरा है कि तुम जितना नंबर ऑफ इटरेशन चूज करोगे, अब ये चीज है जो तुम्हें एक्सपीरियंस से आएगा. जितना बार कोड रन करोगे, जितना बार प्रोजेक्ट बनाओगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमको कितना इटरेशन या क्या रखना है. सो वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग. लेट अस, अच्छा, अब जस्ट टेल मी what I said in my gradient descent algorithm. Your theta, let us say for theta j, this theta j is your theta j minus alpha into slope, right? Right? अब this j can be 0 or 1, because अगर 0 है तो it is your intercept, if it is 1 यानी कि थीटा 0 हो जाएगा या थीटा 1 होगा. ये दो केस होगा. दिस इज योर इंटरसेप्ट, this is your intercept, this is your intercept, and this is your slope. So this is what I mean. अब हम slope कैसे निकालते हैं? If I go here and if I want to get the slope, how do we get the slope? Can anyone tell me? यहाँ पे आर्या, आदि, हर्षिता, वंशिका, हम slope कैसे निकालते हैं? Let's talk about calculus parts there. How do we calculate the slope? Differentiation, yes. So theta j is equals to theta j minus alpha differentiation of your cost function, right, with respect to, correct? Am I correct? Am I correct? Yes or no? So this is the equation. Oh, this is the equation for your gradient descent. This is your equation for gradient specific equation. अब हाँ, this is a function of theta naught comma theta 1. That is why we have taken this partial derivative. That is why we have taken this partial derivative. ठीक है? Is it clear? Is it clear? आगे बढ़े थोड़ा सा. अच्छा, चलो चलो थोड़ा डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं. Your cost function is summation I is equals to 1 till m. ठीक है? I is equals to 1 till m, and your y minus y hat square, and let us take its mean. If you want to take 2m here, you may take 2m here. If you want to take m here, you may take m here. M is your number of points. No issues. ठीक है? This is a mean squared error.
हाँ, अब तुम बोल सकते हो कहीं पे हमने वो लिया, कहीं पे ये लिया, तुम दोनों ले सकते हो, कोई इशू नहीं है तुम्हारे साथ। दैट इज समथिंग प्योर प्योर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे एक्चुअल मॉडल के साथ क्या बेस्ट बैठता है, दैट इज समथिंग यू वुड हैव टू फिगर आउट। यहाँ मैं डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ बिकॉज वो वाला पार्ट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिफरेंशिएशन इज गोइंग हियर। अब दिस वाज योर mx प्लस b और बीटा नॉट प्लस बीटा, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, जो भी तुम रखो, नो इश्यूज। So can I say this j is 1 over m till m y minus mx minus b whole square? Can I write? Can I write? Okay. So this is your function. ठीक है, मैं अभी थीटा नॉट थीटा पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ, बट आई वुड अप्रिशिएट कि यू विल यूज दिस नोटेशन बिकॉज तुम कोई भी बुक या ऑनलाइन मटेरियल देखोगे इधर थीटा नॉट पे होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही रहता है। बट टू मेक इट इजी फॉर यू, ये इक्वेशन सबको आ रहा है, ठीक। सो लेट अस डू व्हाट, let us differentiate this with respect to your slope. Can I do it? Yes, I can do it, no issues. Let us differentiate this. So if you take the differentiation 1 over m as usual, your summation will remain same. This 2 goes out, you have y minus mx minus b, and then you have this function, here comes minus x, this m. So you have this value minus 2 over m, summation I is equals to 1 till m, y minus mx minus b times x. This is your j over del m. आया सबका ये डिफरेंशिएट करने के बाद? अब डोंट आस्क मी कि डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है, चेन रूल। दिस एंटायर थिंग इज अ फंक्शन ऑफ m, तो पहले उसके रिस्पेक्ट में किया, देन अब ये इस फंक्शन को तोड़ा, वी हैव दिस माइनस एम एक्स है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। अब लेट अस डिफरेंशिएट दिस j विथ रिस्पेक्ट टू b, del j रिस्पेक्ट टू del b। So I have this 1 over m, network issue, I would prefer record, कोई बात नहीं नंदनी। अब if I would differentiate it with respect to b, we can simply see कि ये जो यहाँ पे है दिस वुड रिमेन सेम, ठीक है, y minus mx minus b, and differentiation of minus b is minus 1, right? So you have this minus here। आया सबका? आदि, आर्य, हाँ आ रहा है। आया? बिकॉज अब जब हम एक्चुअली एल्गोरिदम बिल्ड कर, अब तुम बोल सकते हो कि हाँ तुमने टू क्यों रखा था, यहाँ टू होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये टू ऊपर से उतरा ना, तो यू विल हैव अ टू हियर, ठीक है, आया सबका? अब ये टू यहाँ नीचे इसलिए रहता है बिकॉज ये जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो फैक्टर कैंसल आउट हो जाए, बट कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। सो दीज आर योर डिफरेंशिएशन। So can I build some algorithm for it? Yes, I can build some algorithm. Should I show you that algorithm? बनाए algorithm? ठीक है। So what I said, हाँ अब देखो, let us build that algorithm. Let us build this algorithmic approach. ठीक है? What I said that Shrinjay
let us do this thing. That let us calculate this factor theta j is equals to theta j minus alpha del j over del theta j. ठीक है, we want to calculate this thing. Just tell me, we want to calculate this thing. This is a function of theta j. ठीक, we want to calculate. और ये कब तक हम करना चाहते हैं? अभी एल्गोरिदम है तो कुछ नंबर ऑफ स्टेप तक चलेगा, राइट? सो वी वांट टू कैलकुलेट इट, or we want to say we want to repeat it till we get converged. जब तक हमको कन्वर्जेंस ना मिल जाए, we want to repeat this step. हर एक वैल्यू के लिए थीटा जे निकालते जाओ और डिफरेंशियल लियो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करके you subtract it from theta j and you update the value. फिर से यहाँ पे you'll get your theta again and you do it till you get converged. You'll get your value of theta j. और अभी जैसा हमने देखा थोड़ा देर पहले, what I said, do what? अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में बोलूं कि you have this theta naught is equals to your theta naught क्या था हमारा? Theta naught was this b. Theta naught was your b, right? Just tell me. So it was थीटा नॉट माइनस अल्फा. अल्फा से सब्ट्रैक्ट कर दो ये वैल्यू, क्या था यहाँ पे? m is what? m is your theta 1 x minus राइट, जो हमारा यहाँ पे था, हमने बस जो हमारा कन्वेंशन है उस कन्वेंशन पे किया. कैलकुलेटेड फॉर थीटा 1, so we'll get theta 1 is equals to theta naught minus alpha minus 2 over m summation over 1 till m, this entire thing times x. ठीक है, this is your gradient descent algorithm. अब यू में से कि ठीक है भैया, ऐसा करते हैं कि we have to calculate it for different पेयर वैल्यूज. हर एक xi और yi के लिए कैलकुलेट होगा. हर एक पेयर लाइक हर एक, अगर तुम्हें डेटा सेट का बात करेगा वो टेबल में, तो हर एक रो के लिए निकालना पड़ेगा मेरे को. यस, so this is what your, just a second, this is what your sorry, this is what your gradient descent algorithm is. This whole thing where your alpha is your learning rate. Sorry, your alpha is your learning rate. हाँ, कुछ बुक में if you go by some book, कुछ इस तरह से भी दिया रहता है that your theta j is equals to theta j minus alpha del j of theta. तो this del ऑपरेशन इज जो हम वहां अभी किए. ऐसा भी रहता, कोई कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है. दिस del ऑपरेटर इज सिंपली योर del ओवर del थीटा. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा. संजय, हर केस के लिए या हर प्रॉब्लम के लिए ये जो डेराइव हुई है फॉर्मूला पूरा है वो ये सेम रहेगा? एल्गोरिदम कभी चेंज होता है? बट हमने जो यहाँ पे लेट किया है वो दूसरे प्रॉब्लम में हमें सकता है दूसरा लेट करना पड़े. लेट क्या किया था हमने?
मतलब इसको मैं प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये थियोरेटिकली तो डिराइव हो गई, मतलब प्रैक्टिकली हर बार यही मतलब लगेगा। अभी जब कोड पे आएंगे तब देखेंगे कहाँ प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, ठीक है। जो अभी मैथ अभी ठीक अभी ठीक। तुम इसको प्रैक्टिकल पर्पस से अभी सिर्फ मैथमेटिक्स की तरह देखो। जो मैथमेटिक्स यहाँ कर रहा हूँ वो क्लियर है, परफेक्ट। अगर वो क्लियर है तो अभी जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो पूरा खुलते जाएगा कि अच्छा हो क्या रहा है। अभी सिर्फ मैथमेटिक्स वाला पार्ट ध्यान दो, बिकॉज ये बन गया तो फिर वो वाला पार्ट इजी है। इट इज वहां पे भी हम क्या करेंगे, इस पूरे चीज को इक्वेशन की तरह वहां लिख देंगे। ये जो रिपीट हमने लिखा है इसको हम लूप में डाल देंगे। ये अपडेट कर रहे हैं तो इट वुड बी समथिंग एज थीटा माइनस इज इक्वल्स टू दिस थिंग। यही हो रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस दिस थिंग। यही हो रहा है। अभी हम देखेंगे आगे, अभी हम देखेंगे आगे इसको। ठीक है, इज इट क्लियर इतना पार्ट? एसेंशियली हमने देखा कि our aim is to get to this point, theta minimum, if this is your graph for theta and sorry j. अब तुम इसको अगर if you would take it to 3 dimensions, if you would like to take it to 3 dimensions, this is your cost function, this is your theta naught, this is your theta 1। तो इस तरह से एक so our aim would be to reach to this चलो ठीक, this point. अब this point width corresponds to some value of theta naught and some value of theta 1। कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे, let us say theta naught minimum, let us say theta 1 minimum। अब इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा कुछ ये वैल्यू होगा, दिस इज j minimum, राइट। सो हमारा एम यही होता है टू गेट टू दैट पॉइंट। अब कोई वैल्यू यहाँ पे होगी तो वो ऐसे ऐसे नीचे स्टेप्स में आएगा, आएगा आएगा आएगा, फिर इसको यहाँ आना पड़ेगा। कोई वैल्यू यहाँ पे होगा उसको ऐसे नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे होगा उसको नीचे आना पड़ेगा, राइट। इस तरह से होता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज ग्रेडियंट डिसेंट। इफ यू गो बाय इट्स नेम, इट इज नोन एज ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। सो लेट मी क्विकली ओपन दैट पीपीटी फॉर यू वंस अगेन, ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर इट विथ यू, जस्ट टेल मी इफ इट इज विजिबल और नॉट। So essentially your concept is this whole thing। भैया यही प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स, अरे हंशिका वहां पे तो और इजी है, वहां पे तो ये और इजी है। मैथमेटिक्स इज ओनली जो इसको ड्राइव करेगा, ठीक है। मैं सीधे तुमको एल्गोरिथम लिखा सकता था कि ऐसे ऐसे होता है, आई कैन डू इट, मेरा भी टाइम बच जाता, तुम्हारा भी टाइम। बिल्ट इन फंक्शन होंगे, यस बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बट मैं बिल्ट इन फंक्शन से नहीं कराऊंगा। तो अपने से वो होमवर्क तुम्हारे लिए छोड़ के लाया हूं मैं। आई टेल यू द हार्ड वे कि अगर तुमको फंक्शन नहीं भी मालूम है देन हाउ वुड यू एबल टू डू इट, वो हम देखेंगे। फंक्शन से करना चाहो यू आर फ्री टू डू इट, करो फंक्शन से। बट ठीक है, यहाँ देखो देखो हम क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। यू हैव टू मेक सम इनिशियल गेस, जैसे हमने वहां पे लिया था कि लेट अस टेक योर स्लोप एज 10, लेट अस टेक योर थीटा एज समथिंग। हमने वहां पे कुछ गेस लिया था अपने से, राइट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदि, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट अगर रात में हो रहा हो ना तो थोड़ा सा पहले कर लिया करो। चलो यहाँ देखते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सम इनिशियल गेस। हम वहां से अपना एल्गोरिथम शुरू कराते हैं। देन वी टेक द ग्रेडियंट। अब हमको बी के रिस्पेक्ट में चाहिए, बी के रिस्पेक्ट में करेंगे। एम के यानी स्लोप के रिस्पेक्ट में चाहिए तो स्लोप के रिस्पेक्ट में करेंगे। इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में चाहिए तो इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे। We update it, we reduce it and we'll do it till we get converged। converged का मतलब है कि the difference between the two iteration is very less of almost zero, almost zero। वो भी हम देखेंगे जब हम इटरेशंस करेंगे अभी,
we will deal with it. तो शुरू करें? Should we go to the implementation part? Should we go to the implementation part? Just give me a thumbs up. Let me open my Google Colab. Just give me a second, guys. Let me open it. अभी जो मैंने बताया, इसमें किसी को कंफ्यूजन है इतना पार्ट में? अगर है तो बोलो, अगर है तो बोलो. Let me name it. Clear. Perfect. अब शायद थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो कैलकुलस पढ़ाया जाता था कहाँ उसका यूज हो रहा है. ठीक है? Okay. So let me share this screen. Let me share the screen. Is it visible, guys? So सबसे पहले I want to load that document. एक मिनट में ये हो जाए. अपना data set, I want that data set. Let me share your placement. Let me load it. So once it is loaded, let us do what? Let us import this thing. तो इस पहले ऐसा करते हैं कि कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं. सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद इंपोर्टिंग सब लाइब्रेरीज. अच्छा, फंक्शन कमेंट्स में बाद में देख दूंगा. आई विल से इंपोर्ट pandas as pd. देखिए ना, ये सब जो इधर होते रहेगा वी विल डू इट. ठीक है, वी डोंट नीड cbond फॉर अ मोमेंट. ठीक है, let us do what? Let us load our data. Let us load data. How do we load it? Let us have a variable name as data, or we'll print it. So in order to get your data, you have this function read csv, and in this thing you will pass the address to this. You can get it here, copy path, place it within this thing. So now your data is ready. pd. Oh. Now your data is. If I want to see कि इस data में क्या columns है, I can say data dot columns. I can have it. You see this has CGP and package as your column. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Let us do what? Let us see कि how do we actually implement gradient descent in this thing. ठीक है, अब देखो हम क्या करना चाहते हैं. सबसे पहले our aim is gradient descent. अगर हम लीनियर, अभी मैं लीनियर रिग्रेशन के लिए यूज कर रहा हूँ. ठीक है, so if we are using it for linear regression, we need something as our x axis and something as our y axis. लीनियर रिग्रेशन में यही होता है कि we want something as our independent variable and something as our dependent variable. ठीक है, let us do that thing. So what I said कि let us have कि there is some x column, and let us, for x column name I want my CGPA. चलो ठीक है, I want my CGPA and my placement. CGPA should be my x axis and column y should be my placement, because यहाँ पे यही दो है. तुम अगर चाहते हो for different variables you can do it, for other part also, no issues, कोई नहीं रोकेगा तुमको. अब I want to store whatever values this will have. What I mean by this, if I write this thing, you see you have different values. अब हम x और y में ये values चाहते हैं, right? We want these values. ठीक है, we'll do what? We'll extract the feature. So how we can extract? सीधे जो इसका डेटा है, इस कॉलम में जो डेटा आएगा हम डेटा उसमें पास कर देंगे, राइट? देखो कैसे होगा. आई गेस ये तुम लोग देखे हुए हो, ये मैं बताया हुआ. लेट अस हैव आवर x as फॉर दिस डेटा में जाएंगे, जिस हमको कॉलम में जाना है वो कॉलम देखेंगे और इसके वैल्यूज को विल पास. ठीक है, सिमिलरली वी डू इट फॉर y. डेटा में गए, प्लेसमेंट वेरिएबल के सारे वैल्यूज चाहिए, इसलिए वी हैव यूज्ड दिस वैल्यू. अब जस्ट टेल मी वन थिंग
क्या एरर आ रहा है? प्लेसमेंट, अच्छा नो इट इज पैकेज, राइट, पैकेज है, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज पैकेज. इट्स पैकेज है. If I print you this x thing, if I print you this x thing, देखो you have this array, right? अब I don't want this like this. हमको इसको ऐसे नहीं चाहिए. I want it in 2 dimension जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, like this. Something as a column vector. So to get that column vector, how I can do it? I can reshape it. I can actually reshape this. I can actually reshape it. ठीक है? I want to reshape this thing. ठीक है? We can do it. No issues. Can do it. Should be x dot reshape. And how do I want to reshape? -1, 1. I do it. Oh, okay, small. Sorry, my mistake. X mistake. It's done. Yes, it is reshaped. If I print it, you can see you are having its value. पहले कैसे था, अब कैसे हो गया? एक कॉलम में. अब तुमको पता लगेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया. एक रीजन होता है. You'll see why we have it. So हमको मेरा डेटा मिल गया, हमको मेरा वैल्यूज मिल गया. शुड वी स्टार्ट कोडिंग फॉर ग्रेडियंट डिसेंट? शुरू करें ग्रेडियंट डिसेंट के लिए. मैं एक पाइथन फंक्शन में बिल्ड करूंगा, बट you can actually go in sklearn. There is sgd regressor, there is this function, there is फिर इसको sgd करके एक gradient descent के लिए भी होता है, वो भी तुम देख सकते हो. बट I'll build a function. So let us say there is this function gradient descent. Let us keep it as gradient underscore descent. ठीक है. अब इस gradient descent में can you tell me what do we need? अगर तुमको फॉर्मूला याद है, if you go by here, let me present this thing, and if I share this for you, just tell me if it is visible or not. Visible है? This cost function में we need some y values, we need some x value, right? Is j, if I have to differentiate this thing, I needed that x and y. Sorry, your x values and y values. ठीक है? We'll do it. No issues. Let me come here, show you tutorial. So what I need in this, I want to pass my x value, my y value. What else? और क्या चाहिए हमें? Do we need some learning rate? Yes, we would need some learning rate. And we want to say what should be my epoch or your iteration. चलो iteration ही रहने दो. ठीक है? Or let us say if we don't get any values for learning rate, we'll take it at 0.01. And let us say for iteration, let us take 1000 iteration. ये है default argument. अगर कुछ value नहीं provide किए तो इतना बार चलेगा. चलो हटाओ. ठीक है? Now let us say, can you just tell me that what should be, if there is some kind of vector in which, if there is some kind of your matrix in which we are storing all the values, can I say कि my m and n should be equal to the shape x dot shape? Can I say like this? Yes, I can say my number of rows and my number of columns should be equal to this thing, because you see
जितना हमको चाहिए उतना मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा जिसमें हम स्टोर करेंगे. यस, वी कैन से दैट. एंड लेट अस से कि अभी whatever is my theta, I'll give it as 0. So to get 0, you can have np dot zeros, and whatever is the n, you can put it n here. Whatever is the number of column, my theta is assigned to 0. Okay. Why we are talking about theta, we'll see आगे. And let us say कि you want to see कि cost क्या आता है. ठीक है, cost भी तुमको देखना है. तो ठीक है, we can have something as your cost history ही रखो. तो my cost history is now empty. अभी के लिए कुछ नहीं है, we'll see आगे. अभी मेरा empty है because अभी हो क्या रहा है, try to build. अब मैंने तुमको बोला in order to build that gradient descent you have to repeat it till your number of iteration. जितना नंबर ऑफ इटरेशन दिया उतना बार इसको रिपीट करना हो. तो कैन आई से फॉर आई इन रेंज योर इटरेशन आई हैव टू परफॉर्म समथिंग. यस, आई हैव टू परफॉर्म समथिंग. जितना मेरा इटरेशन उतना बार में मेरे को इटरेट करना होगा. अब लेट अस सी व्हाट आई वांट टू गेट. इफ आई शो यू दिस नोटबुक हियर, if I show you this notebook here, can you just tell me, just see this and just tell me one thing. To get your gradient, you would need this value. You would need this value. You would need this value. Correct? Am I correct? Just say yes or no. Arya, Vanshika. We need this value. This is your gradient, and you will need this learning rate. And your theta is this thing. Your learning rate into a gradient. This is what I'm saying by theta. ठीक है, यहाँ पे हम ये नोटेशन यूज किया. डोंट गो बाय नोटेशन, अभी हम देखेंगे आगे. एम और सी के लिए अगर टाइम रहा तो आई विल टेक इट फॉर टू वेरिएबल्स एम और सी, बट अभी के लिए तब. So I need this gradient, I need this alpha. So can I code it down? Yes, I can code it down. Just see. Iterations is not defined. ठीक है, अभी आगे define करेंगे, no issues. Define iterations. What I said कि let us define my gradient. So my gradient is what? My gradient is 1 over m. This is my number of, because see what this m is. What this m is, how many data points you are, how many rows do you have. अब समझ में आया क्यों हमने इसको कॉलम में कर दिया था. जब कॉलम में हो गया तो ये कॉलम में जितने रोज हो गए, दैट इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यू हैव. राइट? यस, आई कैन से दैट. I can say that. So your gradient goes down if you would remember this thing. ये कुछ कुछ याद आ रहा है? हमने ये कोई इक्वेशन में देखा था थोड़ी देर पहले. ये सेम फैक्टर्स काइंड ऑफ याद आ रहा है. x into this, if I could make you recall, just see here. X into this thing. ठीक है, लेट्स गेट बैक. जो हम वहां किए हम वही करेंगे. ठीक है, हम बस यहाँ पे उसको कोड कर रहे हैं. वी से माई थीटा इज इक्वल्स टू माई थीटा इज इक्वल्स टू योर थीटा minus your learning rate into gradient.
ये अभी लेट मी रिमूव दिस थिंग, यही हो रहा था, दिस वाज द इक्वेशन, दिस वाज द इक्वेशन। तो अब थोड़ा तुम लोग की पाइथन में आ गए हो अच्छे से, तो लेट मी राइट इट इन अ प्रोफिशिएंट वे। देखिए, दिस इज व्हाट वी सेड, एंड लेट अस कैलकुलेट द कॉस्ट, बिकॉज हम उस पर भी देखेंगे कॉस्ट कैसे कैसे डिफर कर रहा है। सो व्हाट आई सेड कि लेट अस से माय कॉस्ट बी my cost comes to be 1 over 1 divided by 2 times m, जो हमारा एक्चुअल सम था हमने देखा था, into your summation np dot sum, and in that summation तुम्हारा क्या था हमारा y minus y hat का स्क्वायर, तो we'll put it here, x dot theta के रिस्पेक्ट में, and we subtract minus y here, and we'll simply iterations, हाँ, this is my cost function जो हमने देखा था। Now what I want कि whatever cost function you are getting for different iteration, let us put it in this list। So, ठीक है, I can put it there, so I can write cost history dot append, हाँ ठीक है, let us do this। Can I write like this? cost history में जो जो cost आ रहा है different में हम ये list में put करते जाएंगे, and whatever this function should return me, this function should return me this theta and my cost history, right? Cost underscore history. This is what I want from this thing. So this was your function, this was what your function was। ठीक है, this was what your function was। Now let us do what? Let us actually run this thing। Let us actually run this thing up, because अभी तक तुमने यहाँ जो देखा, we have built this function, और ये function is something जो हमने उधर कोड में लिखा, कोड में भी हमने लिखा, जो हमने जैसे वहां किया हमने वही चीज यहाँ पे कर दिया। हमने ग्रेडियंट निकाला, लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट और थीटा का सब्ट्रैक्शन। कॉस्ट हम जानना चाहते हैं बिकॉज आगे हम देखेंगे कॉस्ट कैसे कैसे वैरी कर रहा है। सो लेट अस डू व्हाट, लेट अस रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो अप्रोचेस हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक यहाँ पे थीटा के लिए निकाला, राइट? यू कैन एक्चुअली डू इट फॉर 2 वेरिएबल। मैं अगर पॉसिबल रहा, समझे, अगर ये पॉसिबल रहा तो मैं इसका नोटबुक भेज दूंगा, बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास भी। ठीक है, आई विल पुट इट देयर। ठीक है, आई विल पुट इट देयर। तो शुड वी रन दिस थिंग? शुड वी रन? स्टार्ट करें रन करना। लेट्स रन दिस फंक्शन, लेट अस रन दिस फंक्शन अब, बिकॉज अल्टीमेटली सी हमारा एम होता है जब हम ये फंक्शन रन करेंगे ना, हमें कुछ पैरामीटर्स को बताना पड़ता है, एंड दैट पैरामीटर इज तुम क्या लर्निंग रेट के साथ वर्क करना चाहते हो, तुम्हारा कितना नंबर ऑफ इटरेशंस होना चाहता है। दीज आर द टू थिंग्स यू नीड। ठीक है, these are the two things you need, and since you are returning two values here, let us say कि let me run gradient descent, okay, my theta and my cost history, have this thing only, and I'm gonna run this function gradient descent x and y. What should be my parameter? Should I pass some different parameters? Let us see some different parameters. Learning underscore rate, let us take it 0.001,
and my iterations should be somewhere around 1000. Mind you for my mistakes. ठीक है. And once I get this, let us print theta and let us print cost history. मैं पूरा cost history जानना चाहता हूँ. ठीक है. Let me have इसको हम लोग समझ पाओ. Theta, have it like this. Let me have my cost history as something like this. Cost history. Numpys has no attribute zeros. numpy हमने import किया था. Let me see, import py as np dot zeros. You see, this is the best value of theta that I can get. ठीक है. अब if you will see this list, it is calculating the loss function for different iteration. अब देखो जैसे जैसे ये पीछे जा रहा है, the values are becoming less. देखो कम होते जा रहा है वैल्यू. यहाँ पे somewhere around 26,536 है, यहाँ 24,000 है. If I take it to the very last, you can see the difference between the two iteration is 0. ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0 आ रहा है. Let me take it for 100 iteration. 100 तो बहुत. Iterations. पहले आ गया तो वो कोई बात नहीं, पहले ही रहेगा. सी, ये कभी नहीं चेंज होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा. सी, यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद, लेट मी सी दैट पॉइंट कहाँ आता है. The difference between your corresponding values is very less. We take it to 300. Okay. And now you got your best value for theta. I got my best value for theta. So if you want to do it for different MNC, अच्छा रुको, let me plot it for you. ये तो इतना भैया आपने जो किया सो किया. Now let us plot करके मेरे को दिखाइए. Let's plot it. मैंने यहाँ import mat तो चलो कर लिया है. चलो matplotlib कर लिया. Let us plot the cost function. Let us plot the cost function. ठीक है. Let us plot. What I said, plt dot plot, and what do I want to plot? What do I want to plot in this plot? I want to plot whatever values I'm having. Okay. Range for len of cost history. Cost history. Want this thing. And what do I want in respect to this? I want my cost history as simple, and let me make it for a color. Color should be equal to, let us plot this thing.
मैं इसमें और कुछ वैल्यूज डालता हूँ, ठीक है। इफ यू सी बाय दिस थिंग, ये अगर तुम देखोगे बहुत ध्यान से, यू कैन एक्चुअली सी, यू कैन, अच्छा रुको, उसमें लेबल डाल देने दो। plt डॉट टाइटल, टाइटल डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा कर देते हैं इसको। दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन j, let me make it x label iterations। चलो चलो चलो, you see here, this is how your cost function works, and see, जब हमने जीरो पे स्टार्ट किया, द कॉस्ट फंक्शन वाज वेरी हाई, इतना हाई। जैसे जैसे आपने इटरेशन किया, मैंने एकदम बेस्ट वैल्यू तुम्हारे लिए उठा के दे दिया 0.01। लेट मी डू इट फॉर सम अदर वैल्यू, 0.05। we calculate it, let me, ये सी, मैं करेक्ट वैल्यू पे पहुंच ही नहीं पाया। जैसे जैसे मैं इटरेशन किया और मेरा वैल्यू बढ़ते गया। यू कैन एक्चुअली प्ले विथ इट, ठीक है, यू कैन एक्चुअली प्ले विथ इट। दिस इज समथिंग आई एम गिविंग इट टू यू। इफ आई हैव सम वेरी बिग वैल्यू, लेट अस से 1, दिस इज अ नैन, बिकॉज ये इतना बड़ा नंबर हो गया कि यू कैन नॉट स्टोर इट देयर। देखो, you have this overflow, you have this overflow, you will मैंने क्या बोला, तुम कभी कन्वर्ज नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट दैट मीन, कि तुम कन्वर्ज ही नहीं, इतना बड़ा वैल्यू होते जा रहा है, तुम भागते जा रहे हो और ऊपर। ओके, लेट मी टेक इट फॉर वेरी गुड वैल्यू, 0.001, एकदम परफेक्ट वैल्यू मैंने उठाया। लेट मी टेक इट फॉर 1000 इटरेशंस, थोड़ा और अच्छा हो जाए। नहीं तो बोलोगे भैया आप ही कंजूसी कर रहे हैं, हम लोग से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन। अब देखो, जैसे इटरेशंस बढ़ रहा है, आया आया आया, एंड यू गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर समवेयर अराउंड 30 40 50 इटरेशन, ठीक है। तब से लेके दिस कॉस्ट फंक्शन इज वेरी क्लोज टू जीरो, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, जैसे मैंने बोला था, इट शुड बी वेरी क्लोज टू जीरो। माय लॉस फंक्शन इज मिनिमाइज्ड, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। अब बेस्ट वैल्यू के साथ अगर हम वर्क करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर माय रिग्रेशन वुड बी वेरी एक्यूरेट। लेट मी प्लॉट द रिग्रेशन पार्ट, let me plot the regression part, let me plot the regression line, let me plot the regression line, ठीक है, let me plot the regression line here। Should we plot it? Yes, we should plot it। So let me say plt dot scatter, and whatever is my x and y value, I'll put it simply here, my data, and my column name is what? Let me take it from here only, x column name, data, and your x column name, control V, and in y axis I want my data and my y column name। अब तुम सीधे वहां लिख भी सकते हो, मैं, ठीक है, I want it of the color should be red। ये क्या कर रहा है भाई, सजेस्ट मत करो मेरे को, ठीक है। I don't want dot, I want my marker should be equal to x, because I want my point as x, and I want it to be labeled as, want label as my training data, ठीक है। And let us say this, ठीक है, यहाँ पे मेरे को फंक्शन चेंज करना होगा। I want a regression line, because corresponding to that line I want some kind of line, obviously। Scatter plot के बीच में कुछ line चाहिए। How do I get that line? I can get my line as something very easy as your, this thing, this should be my x-axis as usual, control C, it should be my x-axis, and what should be my y-axis? What should be my y-axis? Can I get the answer? What should be my y-axis?
if I take my, अच्छा देखो यहाँ पे थीटा इज वी गॉट द स्लोप, दिस इज द बेस्ट स्लोप। यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि यार इंटरसेप्ट इज 0, तो योर इक्वेशन गोज आउट टू y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, y is equals to mx। अगर तुमको if you want to go for b you can calculate it for b, no issues, you can do it for you, rather than here if you have, जैसे ये इक्वेशन वाज फॉर स्लोप, तुम्हारा जो डेरिवेटिव जो हमने वहां देखा था दैट वाज फॉर बीटा, और ये b, ये तुम यू कैन डू इट फॉर दैट, ये x वाला पोर्शन वहां से हट जाएगा, you'll get that, you'll get b, you may put it here, like what I mean to say is I can have x dot, what should be my y-axis, my slope theta, theta, x plt dot x label, want some x label here, my x label to be x under here, I want my cgpa, plt dot y label, what do I want at my y label, y label क्या था मेरा, this was package, ठीक है, लेट अस पुट सम लेजेंड्स, बस इसको सुंदर बना रहा हूँ ताकि जब तुम लोग को ये भेजूं तो इट वुड बी क्लियर फॉर यू। You have this regression and this line best fits your value, ठीक है, आगे सबका आया, वंशिका आया, आर्य, यू सी कैसे, देखो ये लॉस फंक्शन कैसे घट रहा है, हाउ इट इज, एंड दिस इज व्हाट योर रिग्रेशन लाइन इज। तो शुड आई अज्यूम कि इस आगे सबको जो मैंने सिखाया, मैं नोट, अच्छा इफ यू वांट मेरे पास कोई नोटबुक होना चाहिए फॉर ग्रेडियंट डिसेंट, एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए है, ठीक है, मेरे पास है, हाँ मेरे पास है, ठीक है, या मैं तुम्हें नोटबुक भेज देता हूँ अभी, इसमें मैं कमेंट आउट कर दूंगा, इफ यू वांट इट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स यू कैन एक्चुअली प्लॉट इट एंड यू विल गेट द वैल्यूज, ठीक है। तो शुड बी वाइंड अप टुडे सेशन, ऑलरेडी देखो 11 हो गया, शुड बी वाइंड अप, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी को, कोई क्वेरी, वंशिका, आर्य, any queries for today's session, give me a thumbs up अगर कोई क्वेरी नहीं है, नॉट हैप्पी। हाँ एक चीज और आता है, देखो ये एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, 10 आई विल टेक 5 मिनट्स ओनली। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, लाइक हमने जो अभी देखा दिस वाज नोन एज बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जिसमें हम पूरे डेटा सेट पे वर्क करते हैं, ठीक है, हमने पूरा डेटा सेट में क्या किया, सब वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लॉस निकाला, उसको अपडेट किया, राइट। So this says you update the model by computing error over entire data set for each iteration, हर एक iteration के लिए। There is this stochastic gradient descent, जिसमें क्या करते हो तुम, you take it like you do it for only one example, you do it for only one example, ठीक है, you do it only for one example, और वहां पे देखते हो क्या तुम सही हो या नहीं हो। Then you have this mini batch gradient descent in which you take very small value, एक डेटा सेट का एक छोटा सा पार्ट लेते हो, उस पे कैलकुलेट करते हो। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट लाइक दिस, ऐसे समझो, टेक इट लाइक दिस, कि तुम एक पहाड़ के ऊपर हो, ठीक है, तुम एक पहाड़ के ऊपर हो और तुमको नीचे जाना है, और तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा फॉग है, कुछ नहीं तुमको दिख रहा है। एक तरीका ये है कि तुम्हारे पास जो जो रास्ता है तुम सब में जाके देखो कि किससे किस में तुम अच्छे से नीचे पहुंच सकते हो, किस पे स्लो सही है नीचे जाने के लिए। सो इफ यू आर एक्सप्लोरिंग ऑल द रास्ता, जितना रास्ता है, दिस इज नोन एज बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज बैच ग्रेडियंट डिसेंट।
स्कोटास्टिक को डिस्प्लेन करना, तुमने बोला कि ठीक है मैं ऊपर हूं, मैं कोई रैंडमली एक रास्ता जाता हूँ, वहां देखता हूँ वहां पे कैसा है, फिर वहां से कोई दूसरा जगह देखूंगा कैसा है, फिर वहां से दूसरा जगह देखूंगा। तुम्हारे पास कोई प्री डिफाइंड प्लान नहीं है, तुम रैंडमली इधर उधर घूम रहे हो ताकि तुमको सही रास्ता मिल जाए नीचे जाने का। So if you're working on probabilities and randomness, that is known as stochastic gradient descent. और तुमने बोला कि काम करते हैं, तो हमारे पास 3-4 लोग हैं, 2 लोग उधर जाओ, 2 लोग इधर जाओ, 2 लोग इधर जाओ, बैचेस में, to get you the best रास्ता to go down. So if that is the case, it is known as mini batch gradient descent. ये मैं तुम लोग के लिए होमवर्क चाहूंगा कि you can actually go read this part and build an algorithm. ठीक है, ये देखो ये डिपेंड करता है कि कैसा डेटा सेट, बहुत बड़ा डेटा सेट होगा तो ये बहुत सही नहीं है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज नॉट समथिंग वेरी नाइस। अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है तो तुमको सबके लिए कैलकुलेट करना होगा, इतना टाइम थोड़ी बैठा है मेरे पास। इफ यू गो बाय दिस मेथड स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, तुम्हारा एरर हो सकता है ज्यादा आ जाए, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन रैंडमनेस। तुमको सही रास्ता मिले नहीं मिले, दैट इज समथिंग भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं है। इफ यू गो विद मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, तुम उतना अच्छा से एरर कंप्यूट नहीं कर पाओ, बिकॉज तुमने एक छोटा सा पार्ट लिया है बस। तो वेल इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो शुड आई अज्यूम कि ये पोर्शन क्लियर हो गया? आज जो हमने ग्रेडियंट डिसेंट कवर किया, शुड आई अज्यूम इट वाज क्लियर? परफेक्ट। एनी क्वेरीज फॉर टुडेज सेशन? आर्या, वंशिका? परफेक्ट। If we don't have any queries, let us wind up आज का सेशन। ऑलरेडी 11 बज गया है। Let me have my dinner also. ठीक है? Perfect. So in next class, we'll start with our next part, which is, I guess, feature selection. और नहीं, logistic regression. We'll see क्या आगे. We'll start with that. Till then, मैं कल तुमको एक प्रोजेक्ट दूंगा. I'll give you the data set. I'll give you the data set. I'll give you the problem statement. और मैं उस पर तुमसे चाहूंगा you build some मॉडल। लीनियर रिग्रेशन का हो सकता है, ग्रेडियंट डिसेंट का हो सकता है, लेट अस सी क्या सही रहता है। ठीक है, तो ऐसा करें कल मैं, यू आर फ्री, तुमको जैसे उसको इम्प्लीमेंट कराना है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तुम नेट को अगर यूज कर तो मेक श्योर यू वुड यूज इट फॉर डिबगिंग, सिर्फ डिबग करने के लिए यूज करो। मॉडल तुम अपने से बिल्ड करो। आई वांट दैट। कर सकते हो ऐसा? शुड वी वाइंड अप आज का सेशन? So let us meet in next session. Till then, good night.